सुबह मन के सुसहाय टीन्स आसाम के ओर से मैं अपने मन के स्वागत जनात हूँ टीन्स आसाम हो करके। और एक बहुत ही खुश खबर है के कहे कि राउर सब जनाला टीन्स आसाम शुरू हो रहा है 2013 सन में। और टीन्स आसाम के द्वारा से आसाम में रहा जितना ही टीनेजर्स छोड़ा और छोड़ी मन के टीन्स आसाम के द्वारा से एक बहुत ही मूल्यवान शिक्षा मन के मिलल जाएला। और वह टीन्स आसाम हो करके हमनी राउर मन के सेवा के लगिन से आग बढ़ा थी। तो इस सेवा में अपने मन जाते हमनी के साथ देबा यही आसरा हमनी राउर मन से करेला। আমি 2025 বৰ্ষৰ টিন্স লাইফ স্কুল 9 বেটছ আমি কৰিব গৈ আছো। অহা 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈকে 13 দিনীয়া ক্লাছ হ'ব আৰু স্থান হৈছে গ্ৰেছ ইংলিছ স্কুল মাইনাজুলি আসাম। সো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক পঠিয়াবলৈ পাৰিব। ধন্যবাদ। টিন্স প্ৰতি বছৰে টিন্স কেম্প টিন্স লিডাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আৰু পেৰেণ্টছ ট্ৰেইনিং আয়োজন কৰে। এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিছু ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি টিন্স ফালৰ পৰা আপোনালোকক এই সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে নিশ্চয় সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। ইয়াৰ লগতে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সকলো লিডাৰসকলক আৰু চলতাসকলক। সবেই আমাক বিগত 12 বছৰৰ পৰা সহায় আগবঢ়াইছে। এই টিনএজাৰ বা যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ টিন্স আসাম আৰু যোৱা 2013 পৰা 2025 লৈকে আমি 8 বেচ টিন্স লাইফ স্কুল কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই 8 বেচ টিএলএছত यानी कि টিন্স লাইফ স্কুলত আমি 400 এবভ ষ্টুডেণ্টক আমি সহায় আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। এই কাৰণে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ। আৰু আমি উৎসাহিত হওঁ যেতিয়া আমি এই টিনেজাৰ্ছৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন দেখিব পাওঁ আৰু বহুত টিনেজাৰ্ছে নিজৰ সমস্যাৰ পৰা উলিয়াই আহি ঈশ্বৰৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু নিজৰ জীৱনটো এটা লক্ষ্য পাইছে। আৰু ইয়াক চাই আমি আকৌ উৎসাহিত হওঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা আগন্তুক সময়ও আমি এই সহায় বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাটো সহায় কৰিব যাতে আমি টিন্স আসাম যি লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমাৰ যুৱক যুৱতীক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাত চলাবৰ কাৰণে এই जितो हमारे विजनत हमें आग बढ़े जावा पारे। टीन्स आसाम में हम आप सबको स्वागत है और हम टीन्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग टीन्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं टीनेजर्स के बीच में, और हम जानते हैं कि टीनेजर्स के बीच में बहुत सारे समस्याओं के साथ वो लोग अपन जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम उन टीन्स एजर को उनके उन समस्याओं से उसके चैलेंजेस से हम उसको हेल्प करने के लिए तैयार है, उनको बाहर निकालने के लिए। सो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो हम लोग टीन एजर से उन लोग को आपकी प्रार्थना के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन है उस जनरेशन को आपकी प्रार्थना के सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारी जो टीन्स आसाम की जो स्टाफ है जो टीम है उसको भी आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। सो आप लोग कृपया हमारे टीम के लिए और पूरे आसाम के लिए हमारे टीनेजर्स के लिए आपकी प्रार्थना में याद कीजिएगा।